बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर जिन्हें नहीं पता कि आपको इंडस्ट्री में जॉब कैसे मिल सकती है और व्हाट आर द की स्किल्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब और हाई पेइंग जॉब्स। क्योंकि क्या होता है कि जॉब मिलना इज I can say it's not a very tough task, but if you want to get job into the top MNC like Microsoft or Amazon or this type of top companies or if we talk about pharma company, then Roche, Johnson and Johnson, Takeda, Novo Nordisk, or if you want to work with these type of top companies, then कुछ तो skills होगी या कुछ तो चीजें होंगी that is required. And also if you are a jobless or if you are a struggling कि आपको job कैसे मिले, so I believe this video is very important for you in this case, because in this video I'm going to talk about more about the advice, like अगर आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे अपनी पोर्टफोलियो डेवलप करना है या आपको क्या क्या चीजें करना चाहिए so that you can get noticed by by CEO और हाई लेवल प्रोफाइल पर्सन और द रिक्रूटर, और या फिर आप अच्छी नेटवर्किंग कैसे कर सकते हो और व्हाट आर द की थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू गेट जॉब इनटू द टॉप एमएनसीज, या फिर अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको ऐसी क्या चीज करनी चाहिए या फिर आपसे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हो रही है जो कि आपको करेक्ट करनी चाहिए. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल minute. I will talk about one by one. So let's get started and let me move towards the first point is show your work. I mean when you are applying for any job, अगर आप अपने रिज्यूमे में लिखते हो कि you have completed 20 projects और 20 big coding projects और 20 big IT projects, या फिर आप ऐसे numbers में डालते हो कि हाँ आपने 100% एक्यूरेसी और विद इन द टाइमलाइन वो प्रोजेक्ट अचीव किया, या आपने कोडिंग करी, आपने ये सॉफ्टवेयर डेवलप करे. सो आई मीन nobody is going to believe on those number until and unless आप अपना वर्क नहीं शो करोगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर and you are saying that you have created a bunch of designing, like t-shirt designing or infographics or maybe social media designing or these type of the work, or maybe thumbnail designing, so how anyone will believe on you? See, I'm also a project manager, and when I receive any resume and someone has mentioned that they have this much skills, I mean, is it like it is very easy to write a resume, anyone can go and copy paste these type of things. But when it's come to the actual skills, so how we can believe? We are receiving a lot more resume from the students or from the experienced professionals, and everyone is mentioning that they have so many skills. And as a project manager, I can say, or as a recruiter, they are receiving a bunch amount of CV. तो आप उसमें से अलग कैसे होगे? It is a very difficult task to pick the right CV. तो देयर मस्ट बी समथिंग लाइक जिन्हें बहुत अच्छा पैकेज मिलता है या जो सेलेक्ट होते हैं उस पोजीशन के लिए, देयर मस्ट बी समथिंग दे आर डूइंग डिफरेंटली फ्रॉम द अदर्स. कुछ तो वो लोगों से अलग कर रहे होंगे. सो आई टॉक अबाउट दैट दैट डिफरेंट पॉइंट्स कि वो क्या अलग कर रहे हैं जो उन्हें जॉब मिल जा रही है. एंड आई विल ऑनेस्टली शेयर बेस्ड अपॉन my real life example or the practical examples which I'm currently seeing into the industry, or which I'm hearing from the top experts, or some of my friends are in the HR domain, or they are recruiting for the top MNC companies. So based upon that, I have collected these data and I'm sharing these information with you. So first thing is show your work, and then how you will show your work. For example, you are a thumbnail designer, then create a portfolio. So it's a very important to create a portfolio means what? आप जो भी काम कर रहे हो, मे बी आपने फ्रीलांसिंग करी, आपने किसी क्लाइंट के लिए कोई वर्क डेवलप किया. फॉर एग्जांपल, आप थंबनेल डिजाइनर हो, आपने बहुत सारे थंबनेल्स अच्छे अच्छे बनाए जिसके बेसिस पे मे बी हो सकता है कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, मे बी मिलियंस में व्यूज़ गए हैं, बिलियंस में व्यूज़ गए हैं, या फिर लैक्स में व्यूज़ गए हैं. सो वॉट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट वो सारे डिजाइन्स आप दिखा सकते हो कि यू कैन फर्स्टली वॉट यू कैन डू,
you can create a portfolio. So portfolio के लिए maybe you can use a Google Drive पे आपने जितने भी अच्छे thumbnails बनाए हैं जिनमें अच्छे views आए हैं, so you can put all the thumbnails there. एंड ऑल्सो आप एक फाइल बना सकते हो जहाँ पे आपने वो थंबनेल्स जिस वीडियो के लिए दिया है और जहाँ पे अच्छे व्यूज आए हैं, सो यू कैन लिस्ट दोस डेटा इन दैट मे बी वर्ड फाइल और द एक्सेल शीट की, या सी दीज आर द थंबनेल्स which I have designed. So this all these thumbnails are present in this folder. So this is the actual sheet. Here you can find all the links of the YouTube channels where you can also list the view in one column. See, so this video has reached, I mean, this much views or this much views or this much views. So if recruiter has that data ki okay, is this person is saying that he has developed so many thumbnails or maybe graphic designing, and based upon that client gets benefited, maybe, I mean, I have just provided example for the YouTube, but if you are a coder, so आपने जो कोडिंग करी है या फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलप करा है उससे क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ है या फिर उसका क्या बेनिफिट्स रहा है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स. एंड you are not just write those paragraphs into the in your CV. However, you are also showing the live example of that. So that's where recruiter get impressed. Okay, so this person has also showing this profile that okay, whatever this person is saying is the correct information. So उनके पास क्या होगा कि वो आपकी CV देखेंगे and then they will see your portfolio, and then they will believe that okay, whatever this person is saying is absolutely right. So yeah, this is the right candidate for this profile. And maybe for example, if they are hiring for maybe the graphic designer or maybe coder or maybe for the medical writer or any positions, so अगर आप उन्हें real life example दिखाओगे, so there are higher chances that you can get selected for that position. हो सकता है कि उस positions के लिए 100 applicants ने apply किया है, but you are the only one, या फिर मे बी ऐसे आप कुछ selected लोगों में से हो जो कि examples दिखा रहे हैं, and मे बी आपका data जो है वो सबसे अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल अगर अदर 10 लोगों ने अपना डेटा दिया, हो सकता है कि आपका जो डेटा है उनसे भी ज्यादा इंप्रेसिव हो, सो दे कैन कॉल यू फॉर द फर्दर इंटरव्यू. और कई बार क्या होता है कि अगर आपका डेटा बहुत अच्छा होता है तो रिक्रूटर और द इंडस्ट्री ऑलरेडी डिसाइडेड कि या वी शुड टेक दिस कैंडिडेट इन. सो वो आपको पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं लेने का, बट जस्ट दे विल कीप दोज फॉर्मेलिटीज लाइक इंटरव्यू एंड दोज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टाइप ऑफ थिंग. बट या, so that's where I'm saying that or emphasizing on this point, like it is very important to create a portfolio whenever you are applying for any positions. So जरूरी नहीं है कि आप रिज्यूमे में बड़ी बड़ी चीजें लिखो, because कोई भी लिख सकता है. anyone can write this. I can also write that I am a, maybe I don't know software editing or developing, but I can also mention that okay, I'm a software developer, I have done this much projects. And how anyone can believe that? Okay, whenever I'll show my actual work, that's where the story starts. That's where they will see that okay, this is the person, and actually this person know this works. So that's where I'm saying that it is very important to create a portfolio and show your work. So ये किसी भी चीज के लिए applicable. It's whether you are applying for a job, whether it's freelancing. जब आप freelancing भी करते हो, so how you will get clients. अगर आप बोलते हो कि आप वीडियो एडिटिंग करते हो, so nobody will give you their video based upon your wording. But if you will show some examples that these are the some examples which where I've edited these videos, so you can see the quality, and these videos are also posted on YouTube, and this video has this video has reached this much views. So this is the, I mean, example of your portfolio, and this is the actual real life example. So I mean, these days people are those who are paying you high amount of money, they'll believe on the examples only. They will not believe whatever you are saying, or until unless you can show your work to them. So that's the first point, and let's move to the second point. So yeah, I'll just move towards the second point. So let me drag my video a bit. So you have to look professional. So you have to look professional whenever you are applying for a job. So it's not like कि आपने ऐसे किसी भी तरीके से आपने रिक्रूटर को ईमेल भेज दिया या कुछ भी. So whenever you are sending a email to the recruiter, please please
चूज द ईमेल टेम्पलेट विच इज वेरी प्रोफेशनल. सो जो भी आप ईमेल टेम्पलेट चूज कर रहे हो दैट शुड बी वेरी प्रोफेशनल, और बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में यू कैन अटैच योर कवर लेटर और योर रिज्यूमे, एंड दैट that email should be very crisp, and all the key points should be listed. It's not like कि आपने 2-4 पन्ने की कहानी लिख दी. It should not be like that. It should be very professional. Or if it is possible for you, create your own um create your own domain name. So there are certain websites like Namecheap, Zuhu. So these type of websites is there. So whenever you go and type your name, for example, for me, like Limitless Shivangi, so I just type this name and they are giving me this email ID, like how I will write, like Shivangi Shrivastava @limitlessshivangi.com. सो अगर मैं ऐसी प्रोफाइल से किसी रिक्रूटर को भेजती हूँ, सो दे विल उनके पास ईमेल्स ऐसे बहुत सारे, मे बी हजारों में रिज्यूमे आए होंगे, बट limitlesshivangi.com से जस्ट वन रिज्यूमे गया होगा. सो व्हेनेवर आप अपनी ऐसे एक पर्सनल डोमेन क्रिएट करते हो, दैट्स वेयर शो दैट यू I mean, you look very professional, and they will see that okay, this person is very serious or looking very professional, and everyone wants to hire a professional person. No one wants to hire any mazakia type of person ki हाँ चलो चलो ठीक है जैसे भी. Even I am also at the I can say senior position, so I know how these things work. So for my YouTube as well, or for my other domains as well, so I do so many things. It's not like I'm just a YouTuber. I also work for a company. Other than that, I also do freelancing or these type of works. So I know how how this phenomena will work. So इसलिए that's where I thought it's very important to create this video and share this real life example with you, because that's why I've created my channel, to share these type of learnings with you guys, like those who are struggling in getting job, or those who want to get a highest paid job in the top MNCs or top companies. So these type of things which you need to take care when you are applying for a job. So I would highly suggest go and create your professional domain. And yeah guys, I just also want to mention that this is not a free thing. So you have to pay certain amount of money, like I'm pretty much sure it is very less, like 400 for every year or per year. So you have, I mean, it will cost 300 or 400 per year. So based upon that they will create this personal domain for you. But yeah, I mean, I don't think so it's a problem to spend 400. I think पिज्जा भी 400 या उससे कम का आता है. So हम बहुत सारी फालतू चीजों पे ऐसे बहुत पैसे उड़ा देते हैं. बट मे बी आप 400 खर्च करके आपको 40 lakhs 50 lakhs की जॉब मिल जाए. सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट डील अगर आप करना चाहो. सो दिस इज नॉट अ paid promotion. This is just a few example which I have just randomly searched. But अगर इसके अलावा आपको कोई सी भी वेबसाइट ऐसी मिलती है जो पर्सनल डोमेन आपकी क्रिएट करने में हेल्प करे, तो आप उसे यूज कर सकते हो. सो दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस. So yeah, you can go and use whatever you want to use, but yeah, try to look professional whenever you are sending a email to the company or recruiter, and try to be different candidates. क्योंकि रिक्रूटर के पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, लाइक मे बी हंड्रेड्स थाउजेंड. सो आपको कुछ तो ऐसा अलग करना होगा जो कि आप नोटिस हो रिक्रूटर की नजर में. सो दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग दिस सेकंड एग्जांपल. सो नाउ विद दिस आई एम मूविंग टू द थर्ड पॉइंट. सो मैं थर्ड पॉइंट पे मूव करती हूँ. Now, third point is, make it easy for the people to contact you. And how you can make it easy, because sometimes क्या होता है, मेरे पास रिज्यूमे आते हैं और उसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स ही मेंशन नहीं होते, ना ही उनका नंबर होता है, ना ही उनकी ईमेल एड्रेस होती है. So whenever you are creating a resume or profile, maybe the LinkedIn profile, or please add your at least your email ID. And I would not suggest to add your number over the LinkedIn profile. Definitely it's a public profile. But yeah, in your resume or the portfolio, or I mean, however you are contacted to the recruiter, try to, I mean, please make sure to add your number. So that's where if they like your profile, if they found your profile interesting, so from there they can contact you. So it's very important to keep your number every time working, so that जब भी वो आपसे contact करे, so that they can easily contact you. With this I'm moving to the next point. So I'll not just I'll just talk on the main points. So now, keep up to date your LinkedIn profile. I think this point is very important,
व्हेन इट्स कम टू दी लिंक्डइन। सो कई बार क्या होता है ना कि हमने एक बार लिंक्डइन प्रोफाइल बना दी और फिर हम उस पे वर्क ही नहीं करते हैं। सो डोंट फॉरगेट दैट, यू नो। So I have searched, I mean, I have read this data, you know, somewhere. So it before hiring, 87% of the recruiters search the profile over the LinkedIn. So अब कोई भी आप किसी भी अच्छी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, तो इट्स लाइक, यू नो, नोबडी इज गोइंग टू मीट यू इन पर्सन। सबसे पहले वो क्या चेक करते हैं, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। सो दैट शुड बी, यू नो, अप टू डेटेड, बिकॉज वो आपका एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। मे बी आपकी जो एजुकेशन है दैट शुड बी अप टू डेट, या फिर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्सेज किया है, सो दैट शुड ऑल्सो बी अप टू डेट। आप मे बी आप जिस पोजीशन पे हो, या आपकी जो भी पास्ट में पोजीशन रही है, आपका क्या जॉब एक्सपीरियंस रहा है, आपने कितने ईयर से कितने ईयर तक उस पर्टिकुलर कंपनी में काम करा है, या फिर कौन से प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट किया है, कौन सा एप्स आपने डेवलप किया है, या फिर कोडिंग के रिगार्डिंग, या फिर मे बी आप फार्मा डोमेन में है तो आपकी क्या क्या स्किल्स है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स मैनेज किए हैं, यू नो, शो द नंबर्स। लाइक लोग जो है स्टैट्स डेटा पे बिलीव करते हैं। लाइक अगर आप उनको अपनी स्टैट्स डेटा शो कर रहे हो, या नंबर शो कर रहे हो, या आपने जो काम किया है, या फिर आपने कोई प्रेजेंटेशन दी है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सो प्लीज कीप अप टू डेट, यू नो, दोज पॉइंट्स। या फिर आपको कोई अवार्ड्स मिला है आपकी कंपनी की तरफ से, या फिर आपने कोई किसी चीज़ में सोशली वॉलंटियर किया है, सो प्लीज कीप अप टू डेट योर, यू नो, लिंक्डइन प्रोफाइल। क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही, यू नो, प्रोफेशनल होना चाहिए। या तो हो सकता है कि आप रेगुलरली पोस्ट करते हो, मे बी आपके ही डोमेन में कोई पर्सन है, मे बी किसी कंपनी का, यू नो, सीईओ, दैट पर्सन इज ऑलरेडी कनेक्टेड विथ यू ओवर द लिंक्डइन, एंड व्हेन दे सी योर पोस्ट एंड दे फाउंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो मे बी अगर उन्हें लगता है कि हाँ, मुझे इस पर्सन को अपनी कंपनी में लेना चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी सोशली एक्टिव पर्सन, सो दे विल फर्स्टली गो एंड सी योर लिंक्डइन प्रोफाइल। सो दैट्स फिर आप जब शादी के लिए अप्लाई करते हो तो अपनी शादी प्रोफाइल को अपडेट करते हो, राइट? दिस इज जस्ट अ वीक एग्जाम्पल. So that's how you need to keep your LinkedIn profile very up to date, because that's where you want, I mean, if you want to get a highest paid job or a job into the good company, so I would highly advise to keep up to date your LinkedIn profile, show in numbers आपने कौन से project किए हैं, क्या कैसे किया है. And although I've also created one video on the LinkedIn part, those who don't know what is LinkedIn and those who don't know how to keep up to date, you know, your LinkedIn profile, so there are certain, you know, videos present in my YouTube channel. So अभी बहुत ज़्यादा वीडियो पोस्टेड नहीं है मेरे चैनल पे, सो आप इजीली जाके देख सकते हो और फाइंड कर सकते हो उस वीडियो को. So go and, you know, watch that video, and based upon that, you know, update your LinkedIn profile. And LinkedIn profile पे एक also एक सेक्शन होता है जहाँ पे आप लोगों से, यू नो, अपना फीडबैक और इनसाइट्स ले सकते हो. सो आई विल हाईली सजेस्ट, अगर आपने किसी, यू नो, किसी क्लाइंट्स के साथ वर्क किया, या फिर किसी, यू नो, सीनियर मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, यूनिट हेड, या फिर किसी बड़े ऐसे पर्सन, या फिर मे बी और टीम मेंबर्स जिनके साथ भी वर्क किया है, आप उस पर फीडबैक लो, या फिर आपका जो भी, यू नो, फीडबैक या इनसाइट्स है. So that will also show you, you know, how professional you are, or the base, I mean, आपको बहुत अच्छे insights मिलते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट्स होता है. लाइक अगर रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल देख रहा है, एंड व्हेन दे सी दैट दिस पर्सन हैज रिसीव्ड अ वेरी गुड, you know, insights from the clients, then there are also you know, chances that, you know, you can get hired for that particular position. So yeah, I think it's very important to keep your up LinkedIn profile, or the Twitter, or I mean these type of profiles, I mean based upon you, I mean where you want to apply and go. So it's very important to keep, you know, your profile up to date. या फिर आपकी जो भी profile है, please, you know, whether it's your profile or resume, please keep up to date. So that's how, you know, recruiter or the, I mean, the project manager will reach out to you. Now, moving to the next point, that is the case study. So, case study is very important. So, case study is what? Case study means real life example. I mean, या आप एक एग्जाम्पल स्टडी शो करते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई टूल डेवलप किया, या फिर कुछ आपने ऐसी कोई कोडिंग करी है, तो आपके पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए. या दैट्स हाउ, यू नो, बाय यूजिंग द जावा और पाइथन आई हैव, यू नो, डेवलप और राइट दिस कोड. सो दैट्स हाउ, यू नो, दिस इज वर्किंग. और आई मीन बाय, you know, writing this code, I mean my company got, you know, this much benefit. या फिर उनको उन्होंने इतना जनरेट किया, या फिर उन्होंने ऐसे वर्क किया, या फिर कोई से भी केस स्टडी हो सकती है. इट्स लाइक, आई मीन, इफ यू आर इन फार्मा डोमेन, सो मे बी
any examples you can take कि हाँ आपने ऐसा एक काम किया and based upon that your company got this much amount of money or work or maybe or any type of example you can take. अगर आपने कोई वीडियो एडिट किया यूट्यूब पे तो हम आई मीन उसके थ्रू पे आई मीन पर्सन के कितने व्यूज आए एंड हाउ मच दे अर्न बेस्ड अपॉन दोज व्यूज और समथिंग लाइक टॉक अबाउट डेटा और स्टैटिक्स और रिजल्ट्स. सो भी जो भी आपकी डोमेन है उसके उस डोमेन में जाके आप अपनी एक केस स्टडीज डेवलप करो. आई मीन बेस्ड अपॉन हाउ मच डेटा you can share. So I mean it's up to you based upon your requirement or the industry requirement or based upon that you can generate. So yeah, I mean it's very important to show the case study. जब भी आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल देखते हो या देखते हो कि हाँ एक्चुअल में इस पर्सन ने ऐसा वर्क किया है तो एज आई मेंशन जैसे कि मैंने पोर्टफोलियो के बारे में बताया कि अगर आप थंबनेल बना रहे हो तो प्लीज थंबनेल की एक अच्छी पोर्टफोलियो बना के रखो. एक एक्सेल शीट में अपना डेटा दिखाओ कि इतने व्यूज आए इतने पैसे जनरेट करे. सो दैट्स हाउ द रिक्रूटर गेट इम्प्रेस. तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो. सो लेट मी यू नो move to the last point. So that is the start learning in public. And yeah, it's very good. Like I mean, if you have LinkedIn profile or Twitter, like I mean, that's how you can get the networking. So networking बहुत important होती है. और networking कैसे होती है जब आप public में learn कर रहे होते हो, maybe आपने कोई course complete किया and then उसको share करो. So that's where people can see your work कि okay, this person is very much serious. Maybe I'm a project manager, so if whenever I'm completing any leadership course or project management course or anything which is related to the projects or these type of skills or maybe Azure or the Microsoft softs के जो भी applications आते हैं या फिर आप कोई सी भी ऐसी चीजें learn कर रहे हो, maybe if you are a graphic designer, so if you are completing course related to the graphic designing or you maybe if you are a software developer, so if you are completing any course regarding the software development or something like that, complete those courses and share over your learnings over the LinkedIn. या फिर आपने कुछ भी अच्छा अचीव किया है या फिर कोई भी मे बी कोई भी आपके डोमेन्स रिलेटेड गाइडलाइंस रिलीज हो रही है या कुछ भी. सो जो भी आपके थॉट्स है या फिर स्टार्ट राइटिंग दोज पोस्ट है या फिर आपने कुछ भी अच्छा अचीव किया है अपने डोमेन्स में so start posting those things over the LinkedIn or start learning into the public domain. So that's where you also get the like minded people. आपके जैसे जो लोग हैं जो लर्न कर रहे हैं या फिर आपके जैसे लोग जिन्हें हायरिंग करनी है आपके जैसे लोगों को. So that's where you can get hired और बहुत ज़्यादा chances होते हैं क्योंकि it is very possible to show your work. I mean it's very important to show your work. जब when you show your work into the public domain, maybe हो सकता है कि आपका next manager आपकी post read कर रहा हो and then this person can get very impressed with your post और अब वो आपको hire कर ले. तो दैट्स वेयर आई एम सेइंग दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर वर्क ओवर द लिंक्डइन. या फिर आप अगर ट्विटर पे अपने जैसे लोगों से कनेक्टेड हो या फिर आपका जो भी वर्क है आप अपनी डोमेन्स रिलेटेड, सो गाइज गो एंड शेयर योर वर्क. So yeah, these are the some important tips which I wanted to share with you. So yeah, go and use these tips if you want to get a job into the MNC, top MNC company, or if you want to get a highest paid jobs. I am 100% sure that if you use these skills or these tips you will get a good pay, good amount of money or a highest paid job. Yeah, I mean it's a very important and I can say these are my life learnings जो मेरी life की जो भी learnings है वो मैं आपके साथ share कर रही हूँ. So guys, go and use these tips and I'm 100% sure that these tips will tips will help you a lot. And if you like my channel, please hit on the like button. If if you find my channel or these information useful, then please also share this information with your friends or with your colleagues or I mean with your family members with whom you think that this will be suitable for this person. So share my video with that person and also hit on this like button and also subscribe my channel because मैं regularly ऐसे videos post करती हूँ. So yeah, thank you so much for watching my channel. Bye. Oh, I need to stop it.